Krish. Namaskar दोस्तों. Good evening. Welcome to the 331st episode of Live Analysis. मेरा नाम है Vishal. This is weekend analysis where we will discuss the entire roadmap for this coming week. So let me just set up the uh, all right. Okay, so I think we are good to go. Okay, so welcome again. I hope you had a great weekend. All of you are staying healthy and trying your best to fight against the pandemic. Situation is little grave, but we have to deal with it. So, good evening, good evening. Let me see how many people are online. Jai Mata Di, Jai Mata Di, Jai Mata Di. Shri Mahakal. क्या बात है? Very good. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Okay, so okay, so let me first start by talking about Bitcoin because last week, if you remember, I had very strongly advocated and warned and forecasted that cryptocurrency इनका टाइम अब समाप्त हो चुका है. And if you remember, I had said that even if Bitcoin breaks above say 61,000 max to max, it can go and test this trend line over here, which can be at 66,000 or say 67,000, but not more than that. And even if we go at this level, we should head back again and we should come towards the 47,000 mark. And that will be the end of Bitcoin rally in this cycle. Now, let us see. Today, we have got a very classic decline. If you see, the pattern is same. We had a break above and fail. So this is the swing fail pattern that I teach in our training, in our price action training, right? So all those students who have attended the training, you should be able to make it out. You see how simple this was. If you had anticipation, you know how you can combine with price action. See here, we had a situation here also. We had seen this, that it breaks above the previous highs, makes a inside bar, and then goes down, comes back, retest, and continuation. A similar stuff happened over here. We had a break above, then a failure, then inside bar, then breakdown on Friday, right? And then the continuation. So those who are trading actively Bitcoin, you could have taken this short over here. We had a inside bar breakdown, a very superb price action trading pattern that is well known across the world. And all professional traders swear by this. All professional traders like to use the inside bar pattern. So these are some of the classic price action trading patterns that I teach in our flagship training. Now these patterns are common patterns, but there is a trick how to trade them, how to switch the trades, when to exit, and all those stuff. So anybody who is interested in joining this training, we hardly have 4 to 5 days left. It is scheduled on April 24th and 25th, which is next week, completely online. That is obvious. And all the details are shared over here. You can WhatsApp on the number and you can get yourself registered. And once you register, you will be added in our Telegram group where post training support in terms of daily market discussion and all those things happen in the Telegram group. So the Telegram group is the real deal because that is where all your doubts and post training support is provided. Not only that, whenever I feel anything is wrong with the market, whenever there is a big move around the corner, be it Nifty, Bank Nifty, stock, MCX, or Forex, I try to alert
and I also try to share the trade ideas, right? So these are the details. If anybody is interested, you are welcome. You can join. Okay, so we are seeing a great crash in the cryptocurrency space, and I'm not at all surprised because this is what we had forecasted and this is what we had expected. Now, what's up with the global markets? So S&P 500 has surpassed the 4160 resistance and it has also, right? So this gives us a further target. There is no weakness, nothing of that sort. And if you remember on Wednesday, I discussed that S&P 500 and US markets, they are notorious for creating a melt up phase kind of a move, right? So if you see the earlier legs over here, if I can eliminate everything and just put the price action, you can see that every time two things happen. Either it just breaks above the previous highs and then crashes, or it goes into a late rally in a melt up phase and then gone. So similar things can be seen. It has happened in past, and I think that is what is likely to happen over here. It can stretch probably say 100 points more, or it may start to fail here. But we need a price action based reversal. Now if you look at this pattern, there is no weakness as of now. Weakness was expected to come near the 4150 4160 area, and on Dow Jones it was around 34,000. So we are not far above from 34,000. We are hardly 200 points. So still, if we get a reversal, now what do I mean by reversal? See, reversal means that the structure has to change. Okay, the structure has to change, and that is why I always say identify the location where price can turn, but take the trade once you see the price action reversing. Now what do I mean by reversal? If you take a look at this rally, since day one it has managed to close above the previous day bottom. Not even a single session it has closed below the previous day bottom. This is called as one time framing. Now, this behavior is a sign of a strong bullish market with a characteristic of a melt up phase. So, we need to see the opposite of this behavior. Now, what could be the opposite? We should see closing below the previous lows. We should see market defending the previous day highs like this, and there has to be breakdown, okay, in terms of candles or in terms of a price structure. Now, what is mean by price structure? By price structure, we mean that something like this should happen. That it should create a pivot over here, goes up, comes down, breaks below the pivot, and then continues. So we need to see all these things, but those things are not yet on the charts. Okay, so global markets देखिए दोस्तों positive, and European markets have continued on the higher side. DAX has again made a new high. French markets are trading up. So all those things are looking good, etc., etc. But again, when I check the emerging market ETF, it is still not that great. And this is something which I'm more interested. I'm not interested in what is Dow Jones doing, what is European markets doing. I have already told you guys that there is a strong possibility that earlier Nifty was leading the global markets, correct? Global markets January में टॉप बना के साइडवेज जा रहे थे, वेयर एज वी वर गोइंग अप एंड वी मेड अ न्यू हाई after the budget as well. So India was already outperforming. India has done its part. Now it is time for global markets. They are catching up. So there is nothing to be surprised. And all other YouTubers, they are interpreting it in an incorrect manner. What they are thinking is that everything is fine. Global markets are moving up. So India should also move up. Whereas the thing is opposite. India has already moved up. India is now under distribution, and the global markets, they are catching up. It is opposite. Okay, it is opposite. So emerging market index, once again, you see we have to track this index, not any other index, because this is the supply of dollar, you can say. This is the dollar chart in one sense or the other. So again, we are at a resistance. We are trading in this type of a channel.
and I don't see this becoming bullish anytime soon. इंटर मार्केट एनालिसिस एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो यूएस डॉलर की मैं बात करूं, यूएस डॉलर थोड़ा सा वीक है। यूएस डॉलर जो है ये फ्राइडे को इसने कंटिन्यूड वीकनेस शो किया है, एंड मे बी आवर मार्केट्स कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ रेस्पाइट फ्रॉम द वीकनेस इन यूएस डॉलर। But again, we have a grave COVID issue right now. So I don't know how much of the goodness that is coming from bearish dollar will be utilized will be offset by the COVID number. Okay, so tonight let us see what's the number. I think today we will cross 3 lakh cases, and again market can be spooked tomorrow morning. Okay, now one more thing is that while dollar is closed on Saturday and Sunday, the notorious money or the Bitcoin, जिसको मैं एक आवारा पैसा कहता हूं, जिसको मैं एक लूज कैरेक्टर मनी कहता हूं, इसने आज वॉमिट कर दिया है। करेक्ट। नाउ दिस इज अ सिग्नल ऑफ द मोस्ट लूज मॉनेटरी बिहेवियर। नाउ दिस हैज टम्बल्ड, राइट, इसने एक वीकनेस दिखा दी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ग्लोबल मार्केट्स है इसमें भी कल आपको मॉर्निंग में वीकनेस दिखाई देगा। सो इफ द ग्लोबल क्यूज आर बैड टुमारो मॉर्निंग, टुनाइट इफ वी क्रॉस द 3 लाख कोविड मार्क, देन एक्सपेक्ट कि कल निफ्टी जो है वापस से 300-400 पॉइंट की डिक्लाइन कर सकता है। निफ्टी की डिस्कशन मैं अभी करने वाला हूं, अभी मैं ग्लोबल हालात क्या है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ठीक है। सो एक तो ये बात है बॉस की इंडिया की हालत लोकली जो है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज वन थिंग। डॉलर से थोड़ा हमको सपोर्ट मिल रहा है, बट कोविड क्योंकि लोकल एक इशू है, दैट इज ऑफसेटिंग द गुडनेस कमिंग फ्रॉम बेरिश डॉलर। नाउ वन मोर थिंग दैट will hurt India going forward is the rise in crude oil prices. See, crude oil हालांकि medium term में bearish है, and I believe this is the last leg before the major crash happens in the crude oil. But फिलहाल ये एक bearish trade है. So the future of crude oil is like this. See, this was the first drop, and now we are in a corrective manner, and then we will start a major decline. बट फिलहाल तो ये ऊपर ही है। प्लस वी हैव द USDINR व्हिच इज बुलिश। तो ये एक डबल वैमी है, बिकॉज USDINR गोइंग अप, crude oil going up, it invites the imported inflation, and Friday को जो WPI numbers थे they are not good. So again बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे ट्रबल है बॉस, बैंक निफ्टी के लिए डबल ट्रबल है पे। ओके, एंड CPI नंबर्स जो है ये भी अब कैचअप करेंगे, डेफिनेटली कैचअप करेंगे। ओके, लॉकडाउन्स वगैरह हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, CPI डेफिनेटली कैचअप करेगा। तो WPI CPI दोनों ऊपर, क्रूड ऑयल अगेन ऊपर, एंड USDINR अगेन ऊपर। ये तो खुशकिस्मती है कि US डॉलर पिछले 3 दिन से नीचे था, सो हमको थोड़ा एक रिलीफ मिल गया। अगर इसमें सी WPI CPI क्रूड ऑयल USDINR, अब इसमें अगर US डॉलर भी जैकअप करने लगे तो आप समझ जाओ कि पूरी तरीके से आपकी बैंड बच सकती है। अंडरस्टैंडिंग? एंड बैंक निफ्टी इज नॉट अ फूल टू क्रैश सो मच इन एडवांस। आप बात को समझिए, बैंक निफ्टी बेवकूफ नहीं है कि वो ऑलरेडी इतना करेक्शन कर चुका है। यानी जो फाइनेंशियल मार्केट्स के जो एक्सपर्ट हैं, these guys, they are sensing something which we are not understanding at the moment. Okay, yes, we are discussing the risk in the system on YouTube every day, and that is validated by the decline in the bank nifty. अब देखिए बैंक निफ्टी का करेक्शन पिछले एंटायर कोविड क्रैश के बाद से, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट करेक्शन दैट वी कैन सी। इफ यू कैन इग्नोर दिस May month correction, because that was while the bottoming process. After that, this was, I think, 18 to 20% correction, and then this is a little correction over here. So bank nifty has already sensed all these troubles, right? And that is why it has already corrected. Okay, now see, the correction has already happened, and that is good. So two things are possible over here, or rather two questions we should ask ourselves: whether all this negativity is already priced in by this correction, or uh, whether this is just the first leg, and then we can have another
leg and then the real fall like this. So, it is not easy to say anything at this moment. We are living in a very complex world. Things are so much intertwined, so much digitized, so much globalized कि यहाँ पे सच क्या है झूठ क्या है ये आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सो दैट इज वाई आई एडवाइज एवरीबडी टू स्टे कॉशियस एंड trade piece by piece. It is a trader's market right now, and overall I have already explained you guys that I'm not expecting new highs on Nifty at any cost. Best possible case अगर निफ्टी की मैं बात करूं दोस्तों तो बंगाल इलेक्शन वगैरह में जो है बेस्ट केस पॉसिबल अगर मैं बात करूं जो मेरी नॉलेज के हिसाब से ये है एंड आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट इज दैट यू मे गेट बेस्ट केस की बात कर रहा हूँ कि एक और स्पाइक अप कुछ इस तरीके से जस्ट टू मेक फॉर्मेलिटी एक और न्यू हाई एंड देन दैट्स इट गेम ओवर बॉस गेम ओवर देयर इज नो वे दिस मार्केट इज गोइंग अप ये भी मैं बेस्ट केस बोल रहा हूँ कि अगर बहुत ही कुछ मिराकल हो जाए रातों रात कोविड गायब हो जाए बंगाल में बीजेपी जीत जाए यू नो बेस्ट केस कह रहा हूँ कि ये चला गया ठीक है ये 1000 पॉइंट चला गया 15,500 एक्सेट्रा चला गया बट अगेन इट विल नॉट सस्टेन एंड वी विल सी अ बिगर क्रैश देन अगर ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना बड़ा क्रैश होगा और अगर इसको ज्यादा बड़ा क्रैश से बचना है तो बेटर ये होगा कि ये इस तरीके से और टाइम पास करे इट जस्ट keeps rotating in this channel you can say and consume as much time as possible because with the passage of time negativity will subside right negativity जो है ये धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा subside हो जाएगा and because market did not corrected more price wise it will the overboughtness and that will invite the fresh money into the system that was waiting for some cooling effect to happen after a stupendous rally like this okay so in any case I do not see a new high the only case in which new high is possible is Bengal election something of that sort but उसके बाद भी बाजार सस्टेन नहीं करेगा मेरा जो फोरकास्ट है वो कुछ इसी तरीके से है कि 2015 में जो बुल का पीक था सी दिस इज वेयर एंड दिस फोरकास्ट आई हैव मेड ऑलमोस्ट 1.5 month बैक दो ट्रेनिंग के पहले ही मैंने ये फोरकास्ट किया था और तब तो ये सही है सो बेसिकली वी आर इन दिस okay I believe we are in this and either we have started the fall or we are just over here and we may get that last push like this but that will not sustain and eventually we have to come down that is for sure okay so चलिए जैसा होगा हम मॉनिटर करेंगे फिलहाल अब आ जाते हैं कि निफ्टी की एनालिसिस पे फॉर दिस वीक okay so let us go to the weekly chart and see लास्ट वीक सो लास्ट वीक में दोस्तों कि मंडे आप सबको पता है हम लास्ट वीक शॉर्ट करके गए थे and then we got a super duper gap down opening and it was a bumper and a killer down move on Nifty and Bank Nifty. Now उसके बाद क्या हुआ टिपिकल जो हर वीक हो रहा है कि आपका वीक की शुरुआत नीचे होगी एंड वीक की क्लोजिंग फ्लैटिश होगी देयर बाय मेकिंग अ स्पिनिंग टॉप और डोजी जो भी आपको कहना है आप इसको कह सकते हैं कभी कभी मैं इसको प्यार से कॉकरोच कैंडल भी कहता हूँ नाउ दिस कैंडल अगेन it shows that we should go downwards and till we are in this channel we are bearish in this market we will make one more minor new low ठीक है तो weekly candle bearish it suggests that market should go down we have taken short position in Nifty and Bank Nifty just before the closing so हम जो है करके गए हैं now क्यों करके गए हैं उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोस्तों थर्सडे रात को इफ यू गाइज रिमेंबर थर्सडे रात को मैंने क्या कहा था मैंने ये कहा था कि फ्रेंड्स ये एक इनसाइड बार पैटर्न है एंड ऑल दी बॉटम्स वर इनसाइड बार्स लाइक दिस करेक्ट all the subsequent bottoms were inside bar so I'm expecting this inside bar to be taken out in first half of Friday and in second half we should start to see a selling and market should close at lower levels possibly ये white नहीं ये black candle बनना चाहिए
So the adjusted closing, the LTP was a black candle, but the adjusted closing made this candle as white. So it is okay, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है. It is okay, okay. But the main thing over here was the forecast was we will break above the Monday high, we will not sustain, we will come down and close again within this candle. Okay, something like what happened over here. Okay, सब similar मैं कहूँगा कि structure wise ये देखिए ये breakout हुआ था and again it came down and then boom crash. Correct? How many people remember this thing? तो ये जो हमने जो anticipation किया वही चीज हुआ. अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि फ्राइडे के दिन यू सी दिस इज वेयर द सेल ऑफ हैपेंड, राइट? दिस इज वेयर ये ब्रेकआउट, देन ब्रेकआउट, फेलियर एंड देन बूम. करेक्ट? सो बड़ा ही सिंपल था इसको फोरकास्ट करना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन. सो वी हैव गॉन विद अ शॉर्ट पोजीशन. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो. अब कैसे इसको टैकल करेंगे? नंबर एक बात कि जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कैसे टैकल करेंगे. देखिए सिंपल सी बात है दोस्त कि फ्राइडे का कैंडल का हाई, दिस इज द स्टॉप लॉस. इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करना है. अगर सपोज कल गैप अप होता है, बिकॉज फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, आई एम जस्ट ट्रेडिंग दिस सेटअप. So if tomorrow we open gap up, that will be the first blow to bears. That will be the first blow to bears, because as a shorter we do not want to see any gap up opening. We want to see a gap down opening, preferably below the Friday's bottom. क्योंकि Friday bottom के नीचे अगर ये बाजार खुलेगा तो trust me we are going to hit this level of 14,350. मैंने फेसबुक पे लिखा भी है कि बैंक निफ्टी हैज अ डेट एट 14,300. सो दिस इज व्हाई आई हैड रिटन, बिकॉज दीज टू लेवल्स आर प्रीटी मच very strong levels. You can see left hand side also we had a bottom on this day at 14,350. We had a gap at 14,350. So this is the level that I am referring over here. तो अगला जो कैंडल है वो यहाँ तक बनेगा 14,350. हो सकता है कि अगेन न्यू लोज वगैरह भी बन जाए, डबल बॉटम भी ब्रेक हो जाए. वो तो तब होगा जब और बेरिशनेस, कल ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव हुई, आज रात को अगर कोविड के नंबर्स बहुत ही बुरे आते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, बट 14,350 14,300 ये तो डन डील है आपका. अब ऑपोजिट बात करते हैं कि सपोज अगर गैप अप होता है तो थोड़ा खराब बात है हमारे लिए. एंड देन इफ वी क्रॉस द फ्राइडेज हाई वी विल एग्जिट द शॉर्ट इन सम लॉस. तो हमारा ट्रेड देखिए लगभग यही है 14,620 के आसपास. तो ज्यादा नहीं है, हार्डली 100 पॉइंट्स का इसमें. फाइन. ओके, नाउ वीकली लेवल्स और कल के लेवल क्या होंगे इनके बारे में चर्चा कर लेता हूं. सो द वीकली मॉब लेवल will be something like this. See, till we are not crossing this candle high on a weekly basis, Nifty is bearish. So the weekly make or break level, weekly mob level, I will keep as the 14,770. Okay, 14,770, and the first target above this will be 14,880 and 14,980. ठीक है, 14,980. And below this first target is 14,000, your 14,260. Okay, let me just write it again. 14,260 and 14,000, round number 14,000. Okay, so we have already made a double bottom, but double bottoms can be broken. So let us see whether we take out these bottoms or not. Bank Nifty is comparatively better, so probably we may save this bottom for this week. And weekly range you can expect 14k to 15k. I don't see market taking out 15k anytime soon. Instead I feel markets are making a lower ceiling. If you see, this is the lower ceiling. Okay, so possibly we have made another lower ceiling at 14,700. This is what I think, and double bottom is in danger. Let us see. ठीक है, तो ये वीकली एनालिसिस है दोस्तों. 14,770, that is the weekly trend deciding level, and above and below targets are given. My bias is bearish, and I will be shorter in this market till we are not crossing the 15,000 mark. Now कल के लिए स्पेसिफिक कुछ अगर ट्रेडिंग लेवल्स की मैं बात करूं तो what will be the
mob level for tomorrow. Again, very easy. I would like to keep as the make or break level. So intraday कल के लिए हम रखेंगे 14,680, and first downside target will be this level 14,500. Second target will be this, which is 1,380, and then I will keep this 14,200 as the थर्ड डाउन साइड टारगेट. ठीक है, सो ये हमारा तीन टारगेट्स हो गया, 1 2 3 ओवर हियर. एंड ऑन द अपसाइड इसके ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं तो मे बी 14,770 तक ये बाजार जा सकता है. यहाँ पे 820 पे मेजर रेजिस्टेंस है, सो 14,820 कैन बी द नेक्स्ट टारगेट. नाउ how to play? See, if history has to repeat, then tomorrow we will open gap down, or we may open flat and then start to crack down. In that case, all these targets towards 14,200 may come. Now the pattern is becoming very repetitive. यानी अब सबको पता चल चुका है कि मंडे को मार्केट नीचे गिरता है और नीचे में जो है आपको बाय करना है. करेक्ट. सो प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल. मार्केट ने सबको ये बात अच्छे से कंडीशन कर दी है. हो सकता है मार्केट बाउंस कर दे नीचे से, वापस से सेम पैटर्न रिपीट हो, बट लास्ट वीक ऑल्सो कि जब कोई एक पैटर्न बहुत ही एक कॉमन होने लगता है, उसमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. बिकॉज मार्केट आपको कंडीशन कर ही इसलिए रहा है कि जब आप इसको बाय करोगे उसी टाइम पे बाजार क्रैश करेगा. सो ये मेरी बात को ध्यान में. इफ यू आर प्लेइंग दिस फ्रैक्टल, इफ यू आर प्लेइंग दिस, then kindly keep your tight stop loss, kindly make it intraday for first day, and then you can if the structure is reversing, then you can play later on. Okay, so that's all. That's Nifty analysis for tomorrow. And from my side it is stay calm and stay short. That is the mantra that I've been following for last 1 month, and every decline is being captured. Now जो लोग इंडिकेटर्स वगैरह थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, लेट मी टेल यू दैट वी आर वेरी bearish in terms of indicators. Okay, so we need one more bottom with a solid bullish divergence, so that some sort of counter back rallies can be generated, जो कि अभी तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, and that is very surprising. Okay, anyways, प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो we have a वेरी सॉलिड प्रोफाइल, एब्सोल्युटली कंप्लीट प्रोफाइल है निफ्टी का, और इसीलिए मैं इसको शॉर्ट करके गया. वी हैव अ वेरी नाइस, वेरी सुपर. सो डेफिनेटली वी शुड कम नियर द 14,300 मार्क ऑन द स्पॉट. ओके, ऑलराइट, लेट अस टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी की जो वीकली कैंडल है दैट इज गुड. ओके, बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल काफी अच्छा है, बट see this weekly candle is not at a great level. Okay, ये कोई बहुत ही सॉलिड लेवल नहीं. हाँ, अगर ये होता आपका 29,500 के आसपास, somewhere over here, then I would have given a good weightage to this bullish candle. Okay, but as of now I don't think so कि ये इतना सिग्निफिकेंट है. हाँ, इसको जब तक ये 32,600 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं इसको बुलिश नहीं मानूंगा. ओके, एट द सेम टाइम बॉटम काफी अच्छा बना है, तो मे बी वी कैन ट्रेड इन अ रेंज. हम कह सकते हैं कि चलो 32,600 से लेके आपका 30,000, ये 2,500 में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं. दैट इज फाइन. ओके, बट पैटर्न इतना कोई ग्रेट नहीं है, अपने आप में इतना कोई ग्रेट नहीं है. ओके, सो आई विल स्टिल फॉलो द सेल ऑन राइज मंत्रा फॉर बैंक निफ्टी. सो आई हैव द डेली. आप देख सकते हैं कि जब तक हम इस डाउन स्लोपिंग पिचफॉक के अंदर हैं, मैं इसमें बेरिश रहूंगा. दिस वाज आवर टारगेट. हम बेरिश यहाँ से 36,000 से हम बेरिश हैं, एंड आवर वेरी वेरी हाई कॉन्फिडेंट टारगेट for these levels, and these targets were met last week. Okay, so now two things are possible कि एक तो ये है कि हमने एक प्राइस वाइज बॉटम बना दिया है, एंड वी आर करेक्टिंग टाइम वाइज. So we have completed say 1 2 3, and we are in some sort of fourth, and this fourth once completed can give the fifth wave. Like now complexity यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसको प्ले करना, ये प्ले करना आसान था, बट ये जो फोर्थ और फिफ्थ है इसको प्ले करना काफी डिफिकल्ट होगा. रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत ही सिंपल रीजन है. देखिए,
SI की ये बहुत ही एक अच्छा लेवल है 30,000 का राउंड नंबर, जो कि बॉटम आउट कर चुका है। नाउ ओवर हियर यू हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एट वेरियस प्लेसेस। तो जब ऐसा माहौल होता है तो इसमें डिफिकल्टी ये होती है कि आप शॉर्ट कहाँ करोगे। आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, या यहाँ शॉर्ट करेंगे। एंड if you try to short at more higher levels, you always run a risk of shorting the next uptrend. So इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा डाइसी है। Nevertheless हम इसको शॉर्ट करके गए हैं, and let us see, we are hoping one more test of say 30,100 and 30,500। अगर ये मिलेगा तो हम इसको यहाँ पे इनकैश कर लेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे लगता है कि जब तक 33,800 जब तक इसके नीचे है, बैंक निफ्टी पूरी तरीके से बेयर्स के कंट्रोल में है। एक और माइनर लेवल मैं आपको देता हूँ, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 32,700। तो ये जो दो लेवल्स हैं, स्पेसिफिकली 32,700, क्योंकि ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके नीचे है, आई विल बी बेरिश इन बैंक निफ्टी एंड वी विल कंटिन्यू टू प्ले इन दिस रेंज ऑफ 30,000। सो 30,000 से लेके 32,700 इस रेंज लॉन्ग शॉर्ट वगैरह प्ले करेंगे। एंड लेट अस सी, हो सकता है कि हम इसमें ही काफी zigzag रोटेट करें, एंड प्रोबेबली देन वी गो फॉर द फुल एंड फाइनल फिफ्थ वेव। ठीक है, सो ओवरऑल आपको बड़ा रेंज में बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी पे वीकली मॉब लेवल क्या होगा, देखिए वीकली मॉब लेवल यही है 32,700। ओके, सो वीकली मेक और ब्रेक लेवल will be 32,700. Above this we can have one target as 33,800, not more than that. And below this we can have first target as 31,100, जो कि कल टेस्ट हो जाना चाहिए, मेरा शॉर्ट इसीलिए है। एंड सेकेंड टारगेट विल बी 30,500। ओके, एक लास्ट टारगेट मैं देता हूँ 29,800 का, ये पैनिक के सिचुएशन में बनेगा। दैट्स इट, 29,800 समवेयर ओवर हियर। फाइन, सो ये है बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, वीकली रेंज, वीकली बायस एंड वीकली। कल के लिए अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आई विल कीप द फ्राइडे हाइज वेरी नियर टू दिस लेवल ऑफ 32,200। ये जो स्तर है यहाँ पे, ये मेरा कल का मॉब लेवल है। ओके, सो 32,200, that should be our tomorrow's mob level, and below this first target is over here, which is 31,387, and second target is all the way 30,600। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं कल के लिए। और पैनिक में ऑब्वियसली 30,000 का ये तो हिट होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। ओके, इसके ऊपर अगर ये जाता है तो मैं सारे शॉर्ट्स को कट करना शुरू कर दूंगा, especially the Friday high. This will be the last stop loss, because as you can see ये जो gap है, above this gap Bank Nifty will become bullish and we can start to see the higher levels such as 2,800 and 33,000। okay, ये bullish हो जाएगा यहाँ पे। So that is the last resistance। फाइन, सो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। लेट अस सी कहाँ मार्केट खुदा है। अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो वीवैप को यूज करेंगे फ्रेश शॉर्ट्स करने के लिए, स्टॉप लॉस को लगा के काम करेंगे। एंड लेट अस सी हाउ मच डाउन साइड वी गेट टुमारो, इफ एट ऑल वी गेट अ डाउन साइड। ओके, एंड द प्रोफाइल इज अगेन क्वाइट बेरिश, वेरी हैवी प्रोफाइल। ये मैंने फ्राइडे को ही ग्रुप में मैसेज किया था, एंड देन दिस एंटायर फॉल हैपेंड। So yes, we will see 31,100. We should come and test 31,100. This is what I've written on Facebook also. So a good decline of 1,000 points. Okay. So that's all from my side. Nifty and Bank Nifty analysis मेरी तरफ से complete है. What are the queries? Okay. ऑल राइट दोस्तों, अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम अभी वॉच कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम लाइव आते हैं। सो दैट्स ऑल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एक बार कमोडिटीज की तरफ चलेंगे, बिकॉज कमोडिटीज में थिंग्स आर लुकिंग स्लाइटली इंटरेस्टिंग कहाँ पे है। देखिए, इंटरेस्टिंग यहाँ की आपका जो गोल्ड है, गोल्ड में जो फर्स्ट अपसाइड टारगेट जो मैंने दिया था कि 47,250, ये टारगेट अचीव हो चुका है। और गोल्ड बहुत ही अच्छे से गोल्ड क्लोजिंग भी गोल्ड ने दिया है। बट आई वुड स्टिल एडवोकेट कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना बहुत ही ज़रूरी है। सी लास्ट टाइम
gold had closed over here, and on this day we took the training, and during the training very clearly I had said that we have a double bottom structure. Gold has bottomed and this is our first target 47,250, and वहां से गोल्ड लगभग 2-2,500 पॉइंट्स की रैली कर चुका है. सो यू सी ट्रेनिंग की जो एनालिसिस थी दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यहाँ पे एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से, एंड डेफिनेटली ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड. वी हैव अ वेरी गुड बॉटम इन प्लेस, एंड फ्रॉम हियर लेट अस सी अगर हमको कोई गिरावट वगैरह मिलती है तो हम उसको पेशेंटली वेट करेंगे. वी विल अलाउ गोल्ड टू कूल ऑफ, and then again we will love to buy this for a next target of say 50,000 51,000 etc etc. okay, so इस तरीके से गोल्ड को प्ले करेंगे. सिल्वर में देखिए मैंने वार्निंग आपको एडवांस में दिया था, क्योंकि सिल्वर में मैंने कहा था कि 69,000 का लेवल जो है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, एंड 69,000 से एक गिरावट आनी चाहिए. ओके, सो सिल्वर हैज नॉट डिक्लाइंड मच below the 69,000, but 69,000 acted as a very good 69,300 से ये डिक्लाइन हुआ है. सो सिल्वर में थोड़ा सा आपको ट्रिकी एक सिचुएशन है, बिकॉज सिल्वर अगर कल दोस्तों गैप अप खुलता है तो अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, ये शॉर्ट ट्रेड नहीं मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग लॉन्ग हैं उनको बुकिंग कहाँ करना चाहिए. ओके, सो सिल्वर आई हैड गिवन दिस 69,000 mark, and that is where the booking should have done. Now tomorrow if we open gap up, so expect करिए कि ये एक 70,000 का आंकड़ा जो है ये आपको दिखा सकता है. ओके, तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप यहाँ पे 70,000 के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर सकते हैं. ऑलराइट, सिल्वर इज अ लिटिल complicated stuff as of now. Why? Because you see सिल्वर अगर दोस्तों अगर बेरिश होता है 70,500 से या 71,000, अगर यहाँ से सिल्वर अगर बेरिश होता है तो सिल्वर में नेक्स्ट राउंड हमें बहुत ही केयरफुली वॉच करना होगा, बिकॉज सिल्वर हैज अ चांस, आई डोंट नो व्हाई, बट सिल्वर हैज अ गुड चांस कि अगर ये डिक्लाइन करता है अगली बार तो इट कैन डिक्लाइन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर like this. Okay, so that is why next round I'll be very cautious in silver. Okay, so let us see. फिलहाल तो 69,000 से 70,500 यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, एंड यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल ऑन गोल्ड एंड सिल्वर. क्रूड ऑयल जो है अभी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रेड आइडिया एज सच, because I want to see how far it can go on the upside, and overall we are still bearish. But अभी कोई trade idea नहीं है. I want it to get itself saturated and exhausted, and then I would like to short it. Okay, so probably maybe somewhere from here it should start the next leg on the downside. So crude oil फिलहाल तेजी में है, बट ना तो मुझे इंटरेस्ट है बुल साइड में ना बेयर साइड में. वी आर जस्ट वाचिंग इट. नेचुरल गैस 204 तक, आई थिंक ये आ चुका है 200 के आसपास तक, सो नो सरप्राइज ओवर देयर. बट यस, आफ्टर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन डिक्लाइन इन नेचुरल गैस. सो a little complicated chart over here, but yes, from this zone of say 204 202, somewhere from here it should start the decline again. तो वॉच करेंगे एंड देन नेक्स्ट राउंड में शॉर्ट करेंगे. आराम से काम करना है नेचुरल गैस में, जल्दबाजी नहीं करना है. ट्रेंड को एग्जॉस्ट होने दो, उसके बाद ही इसको हम प्ले करेंगे. सो 204 इज अ गुड रेजिस्टेंस. 202 204 हो सकता है. USDINR के हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रेट्स में हो सकती है. कॉपर में इंटरेस्टिंग चीज हुई है, बिकॉज कॉपर में जो लास्ट टाइम मैंने जो बुल साइकिल बताया था आपको 660 से लेके 707 के लिए, दैट एंटायर मूव इज डन. इफ यू सी, हमने यहाँ पे इस ब्रेकआउट की बात की थी, एंड देन वी हैड गिवन अ टारगेट ऑफ 700 710, सो दैट इज डन, एंड फ्राइडे वी गॉट अ गुड डिक्लाइन. तो कॉपर एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, क्योंकि कॉपर दो चीज को डिनोट करता है. नंबर वन, द ग्लोबल ग्रोथ और द ग्लोबल डेवलपमेंट यू कैन से, एंड नंबर टू, if there is an inflation coming in the supply chain, if there is any inflation. So कॉपर जो है इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, एंड आई बिलीव अगर कॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट करता है तो फिर हम इसको शॉर्ट साइड में प्ले करेंगे. बट फिलहाल अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है. मैंने लॉन्ग्स जो सजेस्ट किए थे
660 से those longs have given very good results. So we will observe how copper behaves around the 720 and 740 mark, and we will decide कि नेक्स्ट लेग में क्या करना है. ओके, सो कॉपर पे अभी कोई खास व्यू और ट्रेड नहीं है. लास्ट ट्रेड सक्सेसफुल था. निकल की बात करें तो 1215 के आसपास निकल की क्लोजिंग है. निकल जो है अगेन सस्टेन नहीं कर रहा है हायर लेवल्स पे, बट आई थिंक मोर और लेस इट विल बी रेंज बाउंड बिटवीन से 1180 टू 1280. सो ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है निकल में, एंड आई डोंट एडवाइज पीपल टू निकल फॉर फ्यू वीक्स और फॉर फ्यू डेज एटलीस्ट. ठीक है, डाउन साइड में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 1190 1180 के आसपास, जहां पे मैं निकल को बाय करूंगा. ओके, सो आई लाइक दिस स्टफ. if I see a move like this over here, I like the rounding pattern. I have 200-day moving average support at 1180. So I like this level. अगर 1180 मुझे दिखेगा तो हो सकता है मैं यहाँ पे करूँ with some 50 point as a stop loss, या मे बी थोड़ा एक ट्रिकी स्टॉप लॉस लगा के 20-30 पॉइंट का, एंड देन नेक्स्ट टारगेट आई कैन कीप एट 1300. ओके, इस तरीके से. सो ये मेरा फेवरेट ट्रेड सेटअप होगा. अगर यहाँ पे आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा. ओके, सो बेसिकली आई विल बी प्लेइंग ऑन द बार्गेन प्राइस, नथिंग एल्स. सो ये हो गया निकल की बात. और जिंक और लेड में अभी फिलहाल कुछ खास नहीं है. सो आई थिंक आई एम डन विद द कमोडिटीज पार्ट. CPO, palm oil, see agro commodities, ये सब I cannot take. I do not have the data also with me, so I will stop the commodities for now. Okay, so do not trade CPO, palm oil, and all those things. They are very risky. You have gold, silver, crude oil, natural gas, copper. So these are good enough to be traded in the commodities section. Okay, why to go for CPO and all those things, right? They are little manipulated, to be honest, and they are very risky. Okay, now let me talk about the forex. So we have a euro USD, um, and on Friday we saw a very good decline on the NSC in all the forex pairs. So बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, and काफी अच्छा थोड़ा फायदा भी हुआ. Now what is the next leg on euro? Goldman Sachs has issued a buy call on the euro USD. आज शाम को ही उन्होंने बाय कॉल जनरेट. समझ जाओ कि अगर उन्होंने बाय कॉल जनरेट किया है मतलब उसका ऑपोजिट होगा. सो यूरो यूएसडी हैज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एट द 1.2 over here, maybe 1.21. So at best, even if it goes up, it has a limited upside. No doubt about it. It has a limited upside, and possibly it should come next time over here again. So we should see a channel, some sort of channel like this. Okay, so I'm bearish on this. So basically I'm bearish on euro INR and GBP INR also. We had a good decline on Friday, and I will talk only in terms of currency. तो GBP INR पे I have said कि एक broader range होगा आपका 100 से लेके you can say 104.5. Okay, now जब तक USD INR आप समझिए कि 75.5 तक है, तब तक ये लेवल्स जो मैं लिख रहा हूँ ये वैलिड होगा. ओके, बिकॉज 75.5 के बाद एवरीथिंग चेंजेस. इसके बाद जो है एकदम से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद निफ्टी का भी रंग रूप बदल जाएगा, बैंक निफ्टी भी बदल जाएगा. ओके, सो अबाउट दिस न्यू लेवल्स विल ऑपरेट. सो जीबीपी आईएनआर 100 से 104.5 तक है. ऊपर में शॉर्ट करेंगे और नीचे में कवर करेंगे. एक ट्रेडिंग प्रिसाइज ट्रेडिंग रेंज में बताऊं तो 102 से लेके आप 104 पकड़ सकते हैं. ठीक है, ऊपर में शॉर्ट करना है, नीचे में थोड़ा बहुत बाय कर सकते हो, बट आई विल नॉट एडवाइज बाइंग. हाँ कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस 50 पैसे से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए. इस रेंज में जीबीपी आईएनआर को आप प्ले कीजिए जब तक यूएसडी आईएनआर आपका 75.5 क्रॉस नहीं करता. नाउ यूरो आईएनआर में जो एक बड़ा रेंज है एज ऑफ नाउ, that is I can say 88 to 91 का है. ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा और वॉलेटाइल रेंज है, ₹3 का रेंज, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें प्ले कर सकते हैं 88.5 से लेके 90.5. तो इस ₹2 में जो है आप प्ले कर सकते हैं. शॉर्ट प्रिफर्ड करेंगे हम, ऊपर से शॉर्ट करना प्रिफर्ड करेंगे,
नीचे से बाइंग भी आप कर सकते हो, बट छोटा क्वांटिटी विद अ 50 पैसे बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस। अगेन 75.5 जब तक होल्ड है तभी तक ये चीजें हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो आपका ये सारा चीज 2-2 3-3 रुपया एक्सपैंड कर देगा, सो बी केयरफुल। ठीक है। रही बात JPY INR की, जैपनीज येन की, तो आई वुड सजेस्ट दैट 68 to 70, ये 2 रुपए में इसको प्ले करना है। इसको मोस्टली हम सेल ऑन राइज ही करेंगे, सेल ऑन राइज ही करेंगे। ठीक है। सो जो फॉरेक्स ट्रेडर है, बहुत कम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। आई होप आई हैव गिवन यू वेरी वेरी प्रिसाइज लेवल्स विथ बायस, विथ द कैटलिस्ट एंड हाउ टू ट्रेड। ओके, शांति से अगर ट्रेड करोगे फॉरेक्स में तो बहुत अच्छे से आप पैसा बना पाओगे एंड विदाउट एनी मेजर रिस्क। बट इफ यू जंप very quickly in the trades, then stay away from forex market. Chaliye, so that's all from my side. I have covered forex, I have covered MCX, I have covered global markets, I have covered Nifty and Bank Nifty as well. So now it is the time for stocks. But before I proceed further, let me remind you guys that the next training for technical analysis, price action, and pro trading setups, it is scheduled on April 24th, 25th next week. And all those guys who are interested, you can WhatsApp and you can register. Okay, so the first query is SBI cards and payments. SBI cards and payments, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अपोलो टायर, ये तीन स्टॉक्स हम लेंगे। Okay, so Friday we saw a very good spike, but nothing changes as of now. कोई trade view नहीं है मेरा इसमें। And 980, 975, this remains the ceiling for this stock, as you can see. Okay, so SBI कार्ड में अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं मेरा, सी ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है। ओके, मे बी 1010 तक चला जाए, बट स्टिल it is going to be range bound for now. Okay, Ujjivan Finance, Ujjivan Financial Services। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक का बटन दब नहीं रहा है, क्या बात है। एनालिसिस अगर पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ एक्शन जरूर कीजिए। ओके, सी Ujjivan very bearish as of now. You can see stock has no support at all over here. Stock has broken 200-day moving average, and all the moving averages are down. Stock has also broken the so-called, the trend line over here. That was the only, uh, and since then, no looking back. So एक horizontal एक support यहाँ पे एक है as of now, which is round number of 200, but totally bear grip में है, टोटली बेयर ग्रिप में है। सो कैसे आप ट्रेड करोगे? सपोज आपने लॉन्ग रखा है तो आप 190 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, स्टॉप लॉस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, लेट इट गो वेर एवर इट वांट्स। एंड ऑन द हायर साइड, इफ एट ऑल सपोज निफ्टी होल्ड्स, अगर गिरावट वगैरह नहीं आती है तो आपको मे बी 215 तक आपको मिलेगा। ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करना चाहिए, बट इफ यू आर लॉन्ग देन काइंडली कीप 190 एज अ स्टॉप लॉस। यू मे सी टू 15 to 6 पे निकल जाना, बिकॉज नेक्स्ट राउंड में ये 200 का लेवल जो है पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अपोलो टायर इज द नेक्स्ट स्टॉक। अपोलो टायर इज द नेक्स्ट स्टॉक। ओके, सो अपोलो टायर अगेन बेरिश है देखिए, एंड इट इज गोइंग टू बिकम मोर बेरिश इन टाइम्स टू कम। इससे काइंडली एग्जिट हो जाइए। आई थिंक मैंने लास्ट वीक भी इस पे यही बात कही थी कि बेरिश काउंटर है। यू कैन सी हाउ प्राइस हैज मेड अ लोअर लो लोअर हाई पैटर्न। इट इज सिटिंग at the last support on the pitchfork, trading below the moving averages, so it's a gone case scenario. uh, इसमें 180 आना बहुत ही श्योर है। ओके, सो यू विल सी 180 इन दिस स्टॉक इनसाइड बार फॉर्मेशन, एंड बस
ये इसी तरीके से क्रैक करेगा, हो सकता है कल ही आ जाए। 180 का जो लेवल है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें अगर आप अभी शॉर्ट हैं तो देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस है 210। अगर आप इसमें शॉर्ट हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए 225 का, विच इज दिस लेवल। ओके, सो टिल 225 इज नॉट ब्रोकन आप इसमें शॉर्ट भी क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा ऊपर जाए तो फ्रेश शॉर्ट करना बेटर है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो holding your shorts, then you can trail to 225. Target is single target 181. Stock is definitely bearish. Okay, now see these stocks are technically bearish. अगर कोई miracle हो गया तो अलग बात है, but 99% they are bearish only. अगला स्टॉक है यूपीएल। आई विल टेक ओनली वन क्वेरी पर पर्सन, सो इफ यू हैव मल्टीपल क्वेरीज आप जो है सुपर चैट कर सकते हैं। ओके, सो यूपीएल इज 610 and stock is again consolidating in the inside bar pattern over here. So I think कि अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको 580 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओवरऑल मैं इसमें भी कह चुका हूं कि यू नो दिस इज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑन राइज ही इसमें करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग हैं तो यू नो इट्स अ पुअर ट्रेड, मे बी यू नो लग साथ दे और आपको थोड़ा मिल जाए 640 तक मैक्स टू मैक्स। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। ओके ग्रेट, सो टीसीएस we saw a great fall in TCS last week after the result. So this is going to be the theme of this result season. The sell on news. Okay, so sell on news is going to be the theme for this result season, and it is very obvious also for why. सो टीसीएस में देखिए एक चीज आपको बताता हूँ मैं कि इसका जो सबसे अहम लेवल है वो है 3050 3050। ओके, so 3050 that is the level to watch on TCS. So that is the bottom also of Wednesday, right? No, Wednesday bottom is 3070 something. So it's very close to this level of 3050. So I am interested to see TCS coming back again in this zone, spending some time bottoming out, and then I will buy for the next round. Okay, so रेट नहीं है इसमें, अगर आपका लॉन्ग इसमें है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एंड लेट अस वेट फॉर यू नो some visit like this consolidation, and then let it start, let it reverse, then we will buy. Looking to buy in this zone of 3050, but not directly. I want to see the exhaustion and then the reversal in this particular fashion. So no need to rush, no need to rush. Also, once you see IT stocks, all these IT stocks have made some kind of double top or maybe a double top failure. So I'm not rushing at all. I'm not rushing at all. Let's be cautious. See TCS, why I like TCS and why I'm still bullish on TCS from 3 months perspective is because if we look at the monthly chart, we see that there is a inside bar formation, bullish inside bar, or you can say that it is the pennant pattern or flag pattern, whatever you want to say. And this still has 3500 3550 as the target. Okay, so that is why I'm not rushing too early. I will allow this candle to saturate and then again we will buy। 3050 पे मिल गया तो काफी अच्छा बाय होगा, कैश में करेंगे तो बेटर होगा। एंड 3500 के टारगेट के लिए यानी आपको ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न इसमें अगेन मिल सकता है। वेरी वेरी हाई चांस आई वुड से। So let us wait and watch in TCS. Next query has Star, Strides Pharma. Okay, so I will just rush. So Strides Pharma bullish counter है, buy on dips इसमें करना सही होगा। A good level to buy would be somewhere near 870. Okay, and you can keep a stop loss of 836. ठीक है, 870 पे बाय करेंगे, 836 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड टारगेट होगा न्यू ऑल टाइम एंड ऑल दोस लेवल्स शुड बी दी टारगेट। सी मंथली चार्ट इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, अगेन वी हैव a monthly channel, you can say,
a very nice channel in this form, and this channel is being formed at a support of the falling trend line resistance. So overall, it's very nice. And generally, these type of structures, once they move very strongly, and you can see a move towards 1160 on this counter. तो इसमें बाय ऑन डिप मेंटेन कर सकते हैं आप, अगर 870 या 880 कैश वगैरह में बाय करेंगे तो बेहतर होगा। एक फुल एंड फाइनल आप स्टॉप लॉस भी इसमें रख सकते हैं लगभग 836 830 के आसपास, एंड टारगेट्स काफी अच्छे हैं इसके। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस एंड माय व्यू फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन। Okay, Titan, last time we had given one bullish count, and that move, what happened? So I think if you remember, we did this analysis over here on this, somewhere in this areas of say 25 मार्च के आसपास, 22 23 25 मार्च के आसपास, somewhere over here we had discussed this, that it should go and make a new high or a double top, and that was done. Now see, right now I will not give any view on this, and in fact, I should give a short view on this. So what I would suggest is you can short at 1580, 1590, and you can keep a full and final stop loss as say 1640. So this will be the stop loss, and then the next target can be 1500, 1450, 1400. All these levels can be the target. It will be little risky short, but I think it should work, and it can give you very good profit. But keep stop loss in place. Now, why I'm giving this trade is because I'm suspecting a head and shoulder pattern over here, which is like this, correct? So this will break down. We already have a double top like this, right? So a double top with a head and shoulder pattern is definitely going to give you a reward on the downside. So I'm taking a preemptive short करेंगे यहाँ पे 1600 या 1590, over here in this in this zone you can short, say 1580 to 1590, 1600 kind of zone, 20-25 points over here, and stop loss at 1640, and target 1500, 1400, who knows, maybe 1300 also. Okay, so this is how I'm looking at Titan. So all the explanation I've given on Titan, make the most of it. Okay, next stock is Tata Motors. See, Tata Motors थोड़ा सा dodge कर रहा है, because एक बार ये bullish हुआ, then again it became bearish, now again it has bounced back. So let me analyze it in detail कि क्या situation है. Now अगर prima facie मैं अगर देखूं इसको कैंडलस्टिक के टर्म्स में, तो दो चीजें नजर आती हैं। पहली बात तो एक तो ये डबल बॉटम है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, राइट? सो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट एट द सेम what I feel is, let us try shorting this stock. Okay, so what I will suggest is, let us try again shorting this stock near, you can say इसकी closing हुई है around 310 पे, 310 पे closing हुई. Okay, so we may try one more short in this at this gap area. यहाँ पर 320 या 317 के आसपास ट्राई कर सकते हैं, और इसका छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, 326 का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे. ओके, जो ये कैंडल की हाई है, दैट्स इट. एंड देन लेट अस सी ये 280 वापस से आता है कि नहीं आता है. इनफैक्ट 280 शुड कम, and 280 is the last support for this stock. Okay, so this is going to be the last support for Tata Motors. अगर ये 280 इस बार टूटा तो फिर खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. Okay, so थोड़ा dodgy है, थोड़ा it is like not a trustworthy stock as of now. It is trying to dodge ourselves, but fine. Okay, so we will try to tame this stock. Okay, so I'm just trying to analyze it from a pitchfork perspective, the slope and also fine. So I think this is a credible trade. So हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं 326 के स्टॉप लॉस से, और अगला टारगेट जो है 280 का. 280 अगर टूटेगा तो इसको हम फिर कैरी करेंगे फॉर वेरी वेरी डीपर कट्स.
सो लेट अस काफी इंटरेस्टिंग एक माहौल सेटअप हो रहा है इसमें, एंड वी हैव द मैकडी विच इज एब्सोल्युटली फ्लैटेंड. सो अगला जो भी मूव है टाटा मोटर्स पे, इट इज ईदर बॉस ह्यूज क्रैश, okay, back to 250 220 and all those levels, or maybe one more big surge towards 387. जो भी है, बड़ा मूव आने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो जब हमको ये बात पता है कि बड़ा मूव आने वाला है, तो आप बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही मत. ओके, सो दैट्स ऑल ऑन टाटा मोटर्स. With this query, I have completed 1 hour mark in this live session, so it's time for me to wind up. Sipla, I think Sipla I have explained, correct? Okay, so Sipla is again very bullish. Monthly chart is absolutely bullish. 963 का टारगेट है, 963 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना. इनफैक्ट अब प्रॉफिट बुकिंग इसमें करना जरूरी है, बिकॉज इट इज एट अ रेजिस्टेंस, एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट डिप टू बाय बैक अगेन लेटर ऑन. सो फिलहाल बुलिश है स्टॉक, एंड 965 ये एक बहुत ही क्रेडिबल इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन है. ठीक है, so very strong counter, and it can continue to go very higher levels also can come, but for the time being 965 is a good level. PVR, see PVR एक बार मैं ओपन करता हूं, बिकॉज PVR में मुझे कुछ बात कहना है. ठीक है, नाउ कितने लोगों को याद है कि मैंने PVR में 56 इंच की छाती ठोक के कहा था कि PVR ये वापस से इस बॉटम को तोड़ेगा. लेट मी सी हाउ मेनी पीपल रिमेंबर दिस. और ये बात मैंने लॉकडाउन के बहुत पहले ही कहा था कि पीवीआर कुछ भी कर ले, इसको क्रैश होना ही है. इसको वापस से 550 600 ये सारे लेवल्स पे ये स्टॉक वापस से आएगा. सी जो मेरे रेगुलर फ्रेंड्स हैं, जो रेगुलर हमारी जो ऑडियंस है, ध्यान में होगी. एंड लुक हाउ स्टॉक बिहेव. जब आपको, मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखो, जो शेयर मार्केट में विनर जो है ना एक होता है, और 99% जो है लूजर होते हैं. उसी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, ठीक है, सिकंदर केवल एक होता है, बंदर बाकी सब होते हैं. तो अगर आपने कोई अच्छा एक परपेचुअल शॉर्ट काउंटर ढूंढ लिया, तो आपको बाजार में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. निफ्टी 15,000 हो जाए या 50,000 हो जाए, आपका जो ये जो निठल्ला स्टॉक है ये कहीं नहीं जाएगा. ये कितनी भी जाके रैलीज कर ले, ये पीएम कभी बन ही नहीं सकता है. करेक्ट. तो आपको क्या करना है कि जब जब ये रैली करता है, आपको उसकी रैली को बस्ट कर देना है. दैट्स इट. ठीक है, जहां जहां ये रैली करने जाएगा, वहां पे जो है उसकी मीम फैक्ट्री बना के उसको फोड़ दो. इन शॉर्ट आप इसको शॉर्ट कर दो. नाउ लुक एट पीवीआर. क्या करता है स्टॉक क्या करता है? टेक्सचर देखो, पहले हाई बनाई, दूसरी हाई बनाई, तीसरी भी हाई बनाई. ठीक है, इसका डिस्टेंस डेल्टा देखो, डेल्टा इसका काफी ठीक है. इसका डेल्टा कम हुआ, इसका डेल्टा अचानक से बढ़ा, बट डबल टॉप, फिर लोअर, फिर गई भैंस पानी में, फिर एक लास्ट रीटेस्ट. बस यहाँ पे शॉर्ट करना था. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बस यहाँ पे ठोको, यहाँ पे हाई लगाओ, बस उसके बाद आराम करो घर पे बैठ के. 1500 से स्टॉक जो है 1000 पे आ चुका है. तो पीवीआर और पप्पू में ज्यादा फर्क नहीं है. ठीक है, माल कोई भी हो, आना तो इसको यहीं पे है. और ये ग्रीन लाइन जो मैंने बना के रख दी है, बस यही इसकी तकदीर है. यहीं पे इसका मुकद्दर लिखा हुआ है. ओके, सो ये कहानी थी पीवीआर की. सो अभी किसी ने पूछा था पीवीआर, आई डोंट नो किसने पूछा था. तो पीवीआर दोस्त परपेचुअल शॉर्ट है, और ये हमारा परपेचुअल शॉर्टर वाला स्टॉक है. सिमिलरली एक और आपको एक जलवा दिखाता हूँ हमारे एक और परपेचुअल शॉर्ट काउंटर का. ठीक है, जो लोग मुझे 3 4 5 साल से जानते हैं, उनको पता है कि हमारी जो परपेचुअल शॉर्ट होती है वो बहुत ही सोची समझी होती है. लुक एट दिस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. ठीक है, 250 पे, मुझे अच्छे से याद है किसने क्वेरी पूछा था. यहीं पे मैंने कहा था कि स्टॉक से निकल जाओ, अधिक से अधिक ये कितना भी ऊपर चल जाए, इसको वापस से करेक्ट. एंड उसके बाद से आप देखो 250 से ऑलमोस्ट 165 आ गया. अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने कहा था कि 190 पे जब सपोर्ट ले रहा है, कि ये कितना भी सपोर्ट ले ले, इसको टूटना ही टूटना है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द लूजर्स. बिकॉज देखो, विनर विनर बनते जा सकता है, बट लूजर जो है ना, ये टर्न अराउंड नहीं हो सकता. ठीक है, एनीवेज, बहुत अच्छी एक बात आपको बताया मैंने आज शेयर मार्केट के बारे में. बाकी अब
ये जो मैंने लॉजिक आपको बताया ना कि शेयर मार्केट में परपेचुअल शॉर्टर्स को खोजो, पैसा बेयर्स, ट्रेडिंग में बेयर्स पैसा कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट में बुल्स पैसा कमाते हैं। एक स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता था एक टाइम पे, बट देन the scandal and the death of CEO and promoters and all those things happened, but still ये स्टॉक में कुछ तो भाई गजब की बात है, because still it is holding up, and still if you see the higher lows kind of a pattern despite so much of negativity. Now maybe who knows कि हो सकता है लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट इतना देर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, अब तक इसको क्रैश कर जाना चाहिए था, और अभी भी 200 डीएमए के ऊपर है स्टॉक। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि इसको बाय कर लो, इसको उठा लो, स्टॉक को 1122 वगैरह पे मिले तो अच्छी बात होगी। कैश में इसको प्ले करेंगे, एक स्टॉप लॉस में देता हूं 1000, अगर 1100 पे बाय करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 10% का स्टॉप लॉस रखेंगे कैश में। बड़ा स्टॉप लॉस में दे रहा हूँ पर्पसली क्योंकि एक थोड़ा देना पड़ेगा। बट अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट देखो चला ना तो सीधे ये जाएगा 1500, ठीक है। अगर अगला टारगेट चढ़ा तो सीधे जाएगा 1500, तो अगर 1100 से 1500 की चाल मिल सकती है। ओके, 100 पॉइंट का रिस्क है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैश में करेंगे, एफएनओ में नहीं करेंगे, एफएनओ में आप प्ले नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। सो ट्राई टू बाय नियर द 1127 कैश प्राइस में, 1100 1120 के आसपास मिले तो अच्छी बात होगी, एंड देन पुट टाइट स्टॉप लॉस ऑफ से 1000। मुझे नहीं लगता कि स्टॉप लॉस हिट होगा, बट फिर भी यू कैन नेवर नो, एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। क्योंकि मंथली चार्ट देखो, अमेजिंग फैबुलस चार्ट है ये, दिस इज अ रॉकेट लॉन्चर चार्ट। मतलब ये अगर आपको ये 2200 2300 पे ये स्टॉक ना दिखे तो मतलब मैं तो बड़ा ही सरप्राइज हो जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट काउंटर। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट आई स्टिल फील कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना वर्थ है, एंड काउंटर टू रिस्क और टू टेक द रिस्क, ठीक है। सो ये बात है, हाँ टाइम लग सकता है, आई थिंक ये ब्लास्ट कर देता था, बट इसमें थोड़ी इश्यूज हो गई, लोकल पॉलिटिकल इश्यूज है केरला में, गोल्ड स्कैम हो गया केरला में, देन दी प्रमोटर एक्सेट्रा, गड़बड़ हो गया मामला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाटा कंज्यूमर का एनालिसिस कीजिए, टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर तो देखो अभी भी तेजी दिखा रहा है, बट मेरे ख्याल से निकल जाओ यार, ठीक है, मेरे ख्याल से निकल जाओ इसमें, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। Stock can continue to run because stock is still very strong, but why I'm saying निकल जाओ is because of two things. Number one, एक तो देखो ये इसका W shape, एक तो ये हो चुका है, ठीक है, एक और न्यू हाई बनेगा वैसे, ठीक है, एक और न्यू हाई लाइक दिस। सो ये एक फ्लैग पैटर्न समझ जाओ, एंड वन मोर न्यू हाई। सो एक बार आपको 700 दिख जाएगा, बट एक बार निकल जाना यहाँ पे, ओके, ओवर हियर ट्राई टू, बात का बाद में देखेंगे। दूसरी एक और चीज है यहाँ पे कि वी मे सी दी resistance like this over here, so एक बार ये ब्रेक एंड फेल ऐसे भी कुछ एक कर सकता है। सो लेट अस सी 700 एक बार आएगा, वहां पे निकल जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड पे अभी कोई ट्रेड नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड ये स्टॉक जो है ना, जब ये 350 400 के रेंज में था तभी मैंने कहा था कि इसको उठा लो, और 750 का मैंने टारगेट दिया था। इसकी हाई क्या लगी है, 696 लगी है, ठीक है। एक और बात, ओके, क्योंकि अभी आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड आपको एक्यूमुलेशन आपको यहाँ करना था। ये देखो ये जो होता है ना, ये एक्यूमुलेशन जोन है 350, यस आई रिमेम्बर, एंड 350 से डबल ऑलमोस्ट हो चुका है ये स्टॉक। सो फ्रेश अभी कुछ नहीं करना है, अब लेट अस वेट। अगर आप इसमें ऑलरेडी लॉन्ग है तो आई थिंक 750 वाज द टारगेट गिवन, ट्राई टू टेक आउट द प्रॉफिट्स एंड लेट अस पेशेंटली वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। यस सी एग्जैक्टली, दिसंबर में 340 350 के आसपास जो है कहा था मैंने डबल टारगेट के लिए, एग्जैक्टली। एक स्टॉक है हिंडाल्को। ओके, सो हिंडाल्को में मैंने 3 दिन पहले भी एक एनालिसिस की थी, एंड उस टाइम पे शॉर्टर्स
को मैंने वार्न किया था कि ये स्टॉक एक बार ऊपर जाएगा, एंड इट हैज गॉन अप. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? सी द सिचुएशन इज दैट द स्टॉक इज स्टिल बुलिश, बट मैं अब इसमें बुलिश के लिए प्ले नहीं करूंगा. ओके, रादर I will watch this stock for shorting, or I will watch this stock for exhaustion. देखिए स्टॉक जो है 390 तक जा सकता है, 390 तक जा सकता है. ओके, बट इसको मैं अगले राउंड के लिए शॉर्टिंग साइड में रखूंगा. यानी सपोज इट गोज लाइक दिस, आई थिंक इट विल बी द एंड. राइजिंग वेज और ट्राइंगल इस तरीके से सम सॉर्ट ऑफ एंड होगा, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा. 390 पे मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ. इसे कह देना कि छेनू आया था. 390 पे मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ. यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है, सो अभी नो लॉन्ग नो शॉर्ट, लेट अस जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व. सी बाजार में ऑब्जर्वेशन करना ज्यादा जरूरी है ट्रेड करने से. वेरिएशन की एक ईवी व्हीकल लिथियम आयन बैटरी स्टॉक्स पे बताइए. क्या बताइए, क्या जानना चाहते हैं, पूछो तो सही. जेएसडब्ल्यू स्टील, पेट्रोल की गाड़ियां चला नहीं पा रही हो ठीक से, और लिथियम आयन लिथियम वगैरह बैटरीज की गाड़ी चलानी है. पेट्रोल डीजल तो चला लो पहले. जेएसडब्ल्यू स्टील देखो, अगेन बुल फ्लैग पैटर्न है, बट डिफिकल्ट टू ट्रेड यार. वेरी 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 ओवरबॉट, बहुत ज्यादा ओवरबॉट है. ठीक है, सो इसमें अगर आपको एक चीकी शॉट एक मारना है, चीकी शॉट यानी चीकी लॉन्ग ट्रेड करना है, तो आप इसमें कर सकते हो 596 के स्टॉप लॉस के साथ. 50-50 की एक्यूरेसी होगी. आइडियली मैं इसमें कोई ट्रेड अभी दूंगा नहीं, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, कुछ नहीं यार, छोड़ो. वेरी वेरी ओवरबॉट है. HFFC, ये कौन सा स्टॉक है? HFFC, sorry I am not getting the ticker. HFC, HFCL. ओके, आपका टिकर जो है गलत आप बता रहे हैं, थोड़ा सा सही टिकर बता दें. HCL, देखो HCL टेक पे एक बार 980 जो मैंने आपको, आई होप यू रिमेम्बर कि एक इसमें फॉल आएगा 980 के आसपास तक, राइट? सो ये हो चुका है, एंड अगेन इट इज गोइंग अप. सो अगेन ये जो है 1040 वगैरह जा सकता है. सो ये जो है पेंडुलम की तरह, ये देखिए स्विंग करेगा, एंड इट विल ट्राई टू मूव इन दिस मैनर. ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे 50 डीए में जो है ये आपका बाइंग जोन होता है, और हर एक न्यू हाई पे आपको कट करते हुए चल जाना है. तो हु नोस, हो सकता है चल जाए 1070 भी चल जाए, थोड़ा वॉच करना. ठीक है, बट पैटर्न याद रखो, न्यू हाई पे कट करना है. और इसमें ध्यान देना, ये भी टीसीएस वाला काम ये कर सकता है. यानी जब इसका फुल न्यू हाई बन गया, तो ये टीसीएस वाली कहानी रिपीट कर सकता है. फिर तेरी कहानी याद आई. ठीक है, इस तरीके से. सो अतुल गुप्ता जो है, स्पैम मत करो दोस्त. टाटा पावर आपका बाय है, शुड आई होल्ड? टाटा पावर पे मैंने सारा माल खाली करवा दिया था 2 महीने पहले. जब दुनिया बाय करती है तो हम खाली करके भाग जाते हैं. बेसिकली मैं ही था जिसने आपको ये माल चिपकाया था. तो टाटा पावर ये देखो 113 पे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, दिस इज द लेवल 114. यस, तो इसमें से कोई भी मूव अप मूव आता है, आपको बेच बाज के निकल जाना है, बिकॉज स्टॉक जो है बेरिश है, एंड इवेंचुअली स्टॉक जो है 74 के आसपास आने वाला है. पिछले कई दिनों से JIT तंबी जी, डू नॉट स्पैम, डू नॉट स्पैम. ICICI प्रूडेंशियल, ओके, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल देखो अगेन बेरिश काउंटर है एज ऑफ नाउ, एंड मे बी मैक्स टू मैक्स 1475 तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स. It's a bearish counter. It's a bearish counter, and in next round it is going to break, or it is going to rather come at 1300 levels. So sell on rise करिए. Okay, if you have any long position, you can exit, and try to sell over here 1450 14. Make use of this falling trend line, and it should come back like this. Okay, so you will see this stock at 1300, below 1300 as well. Okay, so we have a very very strong resistance on the weekly chart.
and this is the last support. This should be taken down at least once. This should be taken down. So very very great short setup, low risk high probability trade setup है. बायोकॉन सेम व्यू है. आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं एंड 450 एंड 475 आर दी टारगेट्स. ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि बाय करके इसको कैश में आपको रखना पड़ेगा एंड स्टॉप लॉस के तौर पे आप इसको 370 का एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स दी बायोकॉन. पीएसयू बैंक में एसबीआई कुछ मत बाय करो यार अभी तो. आई डोंट थिंक सो. मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी. एसबीआई वगैरह. सी एसबीआई में अगेन शॉर्ट सेटअप है. एसबीआई में जब तक ये 356 के ऊपर नहीं जाता अगेन शॉर्ट सेटअप है. अगेन एसबीआई जो है 326 और 310 का आंकड़ा आपको दिखाएगा. ओके. सो आई एम टेलिंग अगेन एसबीआई जो है 356 356 जब तक 356 को क्रॉस नहीं करता है इसमें सेल ऑन राइज ही कर. टारगेट्स होंगे 325 एंड 310. इस तरीके से मैं देख रहा हूँ एसबीआई को. दिस इज हाउ आई एम looking at SBI in this trend line in this channel. So Shubham Mehta is asking that US market is all-time high. What is my view? You can Shubham, you can just rewind the video, start from the 0.00 and you can watch. I have explained again what's up with US market, global markets. Analyze from global markets perspective only. So the first thing that I talk about is global markets. स्टेट बैंक पे क्लियर. स्टेट बैंक जो है शॉर्ट करना है 356 जब तक सेफ है बिंदास शॉर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है. 320 और 310 आपको डेफिनेटली दिख जाएगा. हो सकता है कल ही दिख जाए. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया छोड़ो यार अभी मूड नहीं है. निफ्टी आई हैव ऑलरेडी टेकन. वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए. एसबीआई बता चुका हूँ अभी, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया. एंड नवीन फ्लोरो प्रॉफिट बुकिंग करो और कुछ नहीं मैं कहूँगा इस स्टॉक पे. पहले भी यही सलाह थी मेरी. 3100 3300 की जो स्कोप है वो हो जाएगी एंड देन प्रॉफिट बुकिंग करिए. सो सेम व्यू है, कोई अलग व्यू नहीं है. सी ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ग्रीन लाइन मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है एंड दीज वर द टारगेट्स. ओके. सो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना बेटर है. सुपर चैट अगर आपका नहीं चल रहा है तो आपको वो सेट करना होगा. ओके. सुपर चैट का प्रॉब्लम होता है. इट इज दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग विथ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स नॉट ओनली इन इंडिया अब्रॉड आल्सो. ठीक है. तो अगर आपका नहीं चल रहा है, पहली बात तो अगर सुपर चैट आपका डेबिट होगा और सामने क्रेडिट नहीं हुआ तो वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा. ओके. बिकॉज इट इज डन वाया यूट्यूब एंड द बैंक्स. हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है. हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL. ओके. सो लास्ट स्टॉक फॉर टुनाइट हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL. सो HUL में फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं है. जब जब इसमें क्रैश होगा तब तब आपको बाय करना है. हमारे टारगेट्स पिछले साल से मैं कह रहा हूँ 2800 और 3200 ये दोनों मेरे टारगेट्स हैं. लास्ट टाइम near 2100 2200 again I had advocated to buy and since then stock is up at 2500. ठीक है. सो वेट करेंगे अगली बार कोई अच्छी गिरावट वगैरह आए तो बाय करेंगे. अच्छी गिरावट इसमें हो सकती है 2300 को मैं अच्छी गिरावट मानूंगा. सो 2300 आएगा तब इसको जो है बाय करेंगे. ठीक है. सो आई थिंक दैट्स ऑल. चलिए गाइस बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, 1 घंटा 30 मिनट लगभग हो चुका है. सो थैंक यू सो मच. चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिस कमेंट भी कर सकते हैं. डिस कमेंट यानी नेगेटिव कमेंट्री भी करो, कोई इशू नहीं है, कुछ तो करो. And those who want to join the training which is coming up next week, you can WhatsApp and you can get registered. And once you register, you will be added in our Telegram group for live market discussion, trade ideas, etc. etc. ठीक है. So thank you so much. Take care. Tomorrow will be a great day. And let us see what's in store for us. Stay safe, stay healthy. Good night. Thanks for joining. Take care. Jai Mata.